Hello all. On 12th of July, a new NFO, Whiteoak Flexi Cap Fund was launched and it's on till 26th of July. And in the market, everyone is asking, ये White Oak है क्या? तो चलिए देखते हैं कि White Oak आखिर है क्या? White Oak is an Indian MNC having offices globally. They have office in UK, in Switzerland, in Mauritius, in Singapore, and few other places. So what they do is they take the money from US, Europe, Asian market and invest that money into India. And this is for the first time कि वो इंडिया में इंडियन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड लेके आए हैं. Unlike other companies who have a backup of bank or insurance, Whiteoak Capital is a purely investment management firm and they have roughly about 40,000 crores Indian rupees under their management. This company was formed in 2017 and the founder is Mr Prashant Khemka, who has a very unique experience. He has worked in US market and he has a global investment experience. ये कंपनी की एक यूनिक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इन्होंने एक मॉरिशस में इंडियन फंड लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडियन इकॉन फंड, जिसका CAGR was 17% and their benchmark is BSE 500. तो जब BSE 500 ने करीब 10% का रिटर्न दिया था, they had given a return of 17%. So it was an alpha of about 6 to 7%. Similarly, they had launched a fund, Ashoka India in Europe, जिसका CAGR was 19.57 and again the benchmark was BSE 500. BSE 500 gave a return of 12.6. तो इस यहाँ पर भी उनका अल्फ़ा का रिकॉर्ड रहा है ऑफ अबाउट 7 to 8%. ऑल्सो जो इनकी स्ट्रैटेजी है अबाउट फ्लेक्सी कैप, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे मल्टी कैप में मिनिमम 25% का रूल है कि उनको मिनिमम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा. इसके लिए दे हैव नेम्ड दिस फंड एज अ फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे उनका अराउंड 50 to 60% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में रहेगा एंड अबाउट 40 इन मिड एंड स्मॉल कैप, एंड दे कैन शफल इट एज पर the market scenario and as per the economy, so that they are not bound by the rules of mid cap fund. Also, one unique thing about Whiteoak is that they have a team of 32 people managing the funds, जहाँ के दूसरे कंपनीज में 2 या 3 लोग होते हैं, मैक्सिमम 4 या 5 लोग. यहाँ पर 32 लोगों की टीम है एंड दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीम अंडर टीम, जहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रुप को बना के एक एक सेक्टर की रिसर्च और स्टडी करने दिया जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी डिसीजन विद अ वेरी डीप स्टडी of each sector and then the decision will be taken about the investment. So in short, I would say Whiteoak is an Indian company who was managing funds, taking the funds from foreigners and investing in India, and this is for the first time that they have come with an Indian fund for Indians, and this is a good opportunity for you to invest either in lump sum or in SIP. लमसम करेंगे तो अच्छा रहेगा because market has corrected to a very great extent and you will get a good return going forward when the market will boom back. Do like and comment and share this video with your friends